Okay, so Yes, shall I Anuj start? ma'am. Okay. Good morning to one and all. I, Anuja Arun Jagdale, Assistant Professor of Kokan Ganpit, Rahul Dakar, College of Pharmacy and Research Institute, Kazar, welcome you all to this virtual platform for the webinar IIC Impact Lecture Series, organized by Institution Innovation Council of Kokan Ganpit, Rahul Dakar College of Pharmacy and Research Institute, Kazar, on occasion of Azadi Ka Amrut Mahotsav under aegis of Mumbai University and has a part of World Entrepreneurs Day celebration, which is dated on 21st August and celebrated every year. Today, we are fortunate to have with us two eminent speakers and ideal examples of entrepreneurs from the pharma field. Mr. Dharmesh Kharwar, Director, NGB Laboratories Private Limited, Gujarat, who is going to speak on the topic Innovation, Startup and Entrepreneurship Ecosystem Enablers, and Mr. Brij Sarda, CEO, Medigrace Pharma, Nagpur, who is going to speak on the topic angel investment, venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs. It's my privilege to welcome Honorable Respected Dr. Mohan Kale, Principal of KGRDCP and RI Kazat. I welcome Dr. Bharat Tekade Sir, HOD of KGRDCP and RI Kazat. I also welcome Ms. Poonam Patil Madam, Coordinator of this event and IIC Convener of KGRDCP and RI Kazat. And last but not the least, I welcome all participants, fellow pharmacists and budding pharmacists who have taken their time out and graced this occasion with their presence. Welcome, one and all. In presence of all of you all, let us formally begin with this program. It's our tradition to start any program with a deep prachulan and prayer as a tribute to Mother Saraswati, that is goddess of knowledge, and Sri Ganesh. To do so, I request Poonam Madam, please run video of virtual deep prachulan ceremony. Thank you, Madam. With this blessing and positive vibes, let us move further on our program. Friends, it is the vision of our beloved principal to conduct IIC Impact lecture series to build culture of innovation, startup, and entrepreneurship in our institute. So, IIC and IQAC cell of KGRTCP and RI Cursor are organizing this event in which the entrepreneurs are invited and they going to share the experiences and journey with you all. So I request everybody to pay attention and gain the knowledge from these successful personalities. The purpose of World Entrepreneurs Day is to create awareness for entrepreneurship, innovation, and leadership among the stakeholders. KGRDCP and RI believe in providing the wings to generate innovative ideas and nurture our students to establish their startup through promoting the entrepreneurial spirit. Entrepreneurs must reflect on lessons learned throughout the culture current COVID epidemic on World Entrepreneurs Day. The once in a generation epidemic served as a wake up call, but it also taught us to accept the new normal. With this, about the program, now I request Poonam Patil ma'am to introduce our guest, Mr. Dharmesh Kharwar sir. Over to you, ma'am. Thank you, Anuja Madam. So, I also would like to welcome everyone to this platform, Principal Sir, Dharmesh Kharwar Sir. So, it's a great privilege to introduce Dharmesh Kharwar Sir. Mr. Dharmesh Kharwar is Independent Director and Strategy Advisor with focus on healthcare sector. Dharmesh Sir has broad experience of more than 28 years of extensive cross-functional capabilities. His expertise in market entry, expansion, transaction. His expertise in and out licensing, co-marketing, brand launches, and life cycle management, tenders. He is also expertise in patent, pricing, and statutory litigations, manufacturing and procurement of product development, technology transfer, registrations, commercial supplies of inputs and output materials to meet exact specifications and needs. Uh,
He is also expertise in building and sustaining strong system and teams, commercial in import, export, registrations, and sourcing. Dharmesh sir has completed his master's degree in pharmaceutics from Department of Pharmaceutical Science, Nagpur University. Completed his MBA from Jawaharlal Bajaj Institute of Management Studies. He has also did post-graduation program in artificial intelligence for leaders from University of Texas, Austin, USA. His previous assignments included position of director at Jensen J&J as a director, MSD Pharmaceuticals Private Limited, and recently he is director of NGB Laboratories Private Limited, and life member of Indian Pharmaceutical Association. So this is the shortest possible introduction I can give about Dharmesh Kharwar sir. So once again, I welcome you, sir, and hand over to you for a further session. Sir, please unmute yourself. Thank you so much, and I really appreciate the Rahul Dharkar College of Pharmacy, Kale sir, the entire faculty, and last but not least, the students who are here today to listen to this, some of my thoughts on this, and I'm sure that this will be a very engaging session for all of us. I will share, as actually my journey has been shared a little bit, but I'll share you some examples, some of the things which I have been doing throughout my career, and then we will move on to the topics. So, as a part of my introduction, some examples of what I've done, so that you know what introduction was given, actually practically what it means, and then we'll go down to the real topic, which is the ecosystem for entrepreneurship, innovation, and startup. So I will just go to my screen now, and once you see it, let me know. You see my screen? Hello? Can you see my slide? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. So what's the agenda now? There are some of the parts which are being covered by Mr. Brij Sarda later on. So I will not go into those parts, but I will go into, in the first bullet that I see, some of the topics or the examples of work that I've been doing. Then the scope for today, which is what is the ecosystem about. So what are the basic tenets? Then where to start, where to go, public and private, and then who will do, and the value proposition, some parts, and then later on Bridge will take over the other parts of conceptualization. So I will take the initial few bullets which are required in the startup ecosystem, and I will let you know which are the best starting points uh, before your actual crystallization of your the startup or the innovation or the the entrepreneurship journey can begin. So I'll just give few of my examples. This is what was just Ms. Poonam said. Now this is what I'm doing after all that introduction, all my experiences and things like that. What I'm offering is, while running my own business, I also offer these customized services, which include legal, regulatory, merger acquisition, private equity IPO, and on the technical side, on the left, the turnkey plant management or the product management, API, how to grow the company, how to do quality and compliance. So, and since I'm not expert in all, and I don't claim to be, I bring in various experts depending on the situation at hand. Some of the examples of strategy that I would say is, there are different aspects. There is strategy, there is a technical, there is due diligence, projects engineering, MA, licensing, human resources, where uh, in strategy, for example, I have designed a market entry strategy for US based, US FDA approved, patented microendoscope cum biopsy device. So this is this is another startup company based in US, but they want to enter India because, see, today India is the best destination for anybody. You know how China is. China has a limited entry right now. In fact, everybody is trying to exit and set up base in India. India is the
largest market and is going to be the largest, most populous country in a few years, and it's crossed China already, and we are going to be most populous. The opportunity for a democratic country like India is tremendous. Everybody from US to Europe to Japan, everybody wants to come here, and that's the thing which is happening right now, and hence this is a huge opportunity for all of us to make. And globally there is a strategy called China plus one, wherein their main base still they want to keep as China, but they want to have India as the plus one right now, because we as entrepreneurs, as startups, need to build this entire ecosystem where we will become from China plus one to India plus China in the future. And today you are here to make that happen. So these are some of the examples that I have been doing to make that happen. So first one was, I gave the example of this micro endoscope launched in US, but they want to enter India. The second one is make in India policy. I've already done that in my earlier couple of companies, but now I'm guiding companies how to make things in India which were imported, fully imported products, how we make in India, how to actually have the right infrastructure with the correct quality, correct compliance to make those products which are always imported in India. I'm doing various advisory companies, like, they have built a facility, they want to either grow or they want to sell off to another right part. So that's a pellets and DC granules. Then I'm advising one contract manufacturer for the who's making COVID vaccine, the right strategy, which company they should try, and then what other than COVID, because COVID is now, practically it's gone. Then what other vaccines? So then I will help them make a list of various vaccines that they can market and tie up with the right partner. I have advised celebrity dermatologists on what kind of products that they can actually change from one supply to another with a better quality, better supply chain, etc. I'm advising a law firm where they want to make a mass application system for the all the application filings that we do, which is government has an electronic portal, but there are too many applications which require human resources to compile that application before it's uploaded. So I'm helping them with that. I'm also very experienced in patent battle strategies, where entrepreneurs, like anybody who invents a system, files a patent, how to protect these patents, defend this patent, not only in India but globally. Then I also do a lot of technical and development advisory on various products which you are more familiar with as pharmacists, how to make, different kinds of dosage forms, how to make import substitution, prevent, stability issues, compendial compliance of IP, BP, USP, etc. Then, developing very special now natural products in gummy form, making price control products to non-control in legally compliant manner, then developing various innovative products like micro sponges and zero odor alcohol gel. Alcohol smells a lot. Minoxidil, intraocular gel, various formulation technologies. So these are the various things, and some of these products I have developed myself and I have sold them off with the rights, etc., given off at certain things. Certain things I still manufacture or get them manufactured. Due diligence also I do, where because of this experience that we have, uh, certain companies will ask us saying, can you evaluate so and so a product, project, site, facility, or supply chain, or any such thing. So how do you do those due diligences? So there is a list of due diligences also. Then there are projects in engineering where I build certain turnkey plants, upgrade of older facilities. Like right now, I'm working on that one where they have a lot of demand, but they are not able to meet the international norms right now. So that kind of facility, I'm helping them upgrade. Co-development of barcoding and integrated software solutions. Making a supply chain more rationalized, setting up different kinds of units, etc. Then designing a tender system, because government and states of India do a procurement of a lot of medicines, and those medicines have to be supplied, and there are tenders floated.
and those tenders have specific requirement. Now, in order for someone to supply, they need to have a very robust mechanism in terms of shelf life of product, labeling of product, timelines of product, labeling, all those things are there. So how to make this very efficient, because manually emails or Excel spreadsheets, etc., are very cumbersome. So how to design that software that will help make it very automated, mass, large scale. So and also some things like, there are, you see, every packaging is a product which is developed based on an artwork or a label. Now imagine there are millions and millions of products which are there across the world, and I also set up a system where a third party provider will develop artworks for world, US and Europe, but it is based out of Mumbai, India, using high-tech software workflows. So these are the various kind of things which I've done in these technical areas. Then there are also merger and acquisition, that is M&A, licensing and others, where I have made deals with a buyer and a seller of a technology, buyer and seller of a product, etc. And then I also do a lot of HR, human resources and liaison, where I've been teaching, giving lectures, seminars, and generally giving my thoughts and ideas to young people like you. So this is in brief that technically what that summary and introduction was given. You get a feel that what all the things that I like to do, there are different things. Each one of you has a specific interest area. These are my interest area which I've been doing the work, and I'm sure you also all have various areas. But then it all starts with some kind of idea. So what is Startup India? And that is the ecosystem enabler for today, the topic for today. See, the current government has done a lot of initiatives uh, to help entrepreneurs and innovators to have a startup culture. And then you have seen various news reports that there are 100 unicorns in India, and that is $1 billion valuation companies, and a lot of them have given also share listing called IPO, initial public offering, and all that will be taken up by Mr. Brij Sarda. But I would say it starts somewhere. And where does it start? It starts with an idea and a need, where you see something, a service or a product that will fulfill the various needs of the society. Now, in pharma space, you've seen there have been various startups like Pharmeasy or 1MG and things like that, where they have taken the model of delivery of service. There are certain other startups which provide actually healthcare facilities. There are other startups which provide diagnostics. There are many startups who have actually developed various kinds of devices. So these are the various startups in healthcare space. There are other startups like various IT models, payment systems like Paytm or Phone Pay, and so many others. So there are startups in various kinds of sectors of the economy, and you can choose whichever you want. So today, while you may be studying pharmacy, uh, pharmacy obviously is a very wide, diverse subject which covers a lot of areas. It requires engineering, it requires physics, chemistry, biology, health care, nutrition, so many other things it requires. Manufacturing to regulatory to marketing. So everything is covered, and it's a very good space to have your own startup in the related fields or in the same fields. And that's where the government initiatives is there as a primary starting point, where you can get the best of schemes and the infrastructure to do this. There are also private methods which can help the enabling the startup depending on which route you want to go. So what is the main principle of the startup scene? That what is the first step is, supposing you have an idea, and you have developed some kind of concept, proof of concept, what we call a prototype. You have even tried it some places, but really don't know where to do and how to reach it to the public to give them that benefit of the product or the service. So what Startup India does is, and I'll take you through some websites and various fields, because all that I don't want to capture in just the PowerPoint slides, because that is more of the experience of the website that government has created, and we'll go through some of that.
and I'll tell you in each stage what are the other parallel activities we need to do in order to have those things enabled. So the first step is the simplification and handholding. See, earlier formation of a company used to take months. It required a lot of agencies, a lot of consultants, middlemen, etc. But today you can actually simplify and start your company. It could be a limited company, private limited company, 1% company, LLP, limited liability, partnership or regular partnership, or the single person also. So you can be a single promoter also if you don't have a team and you are single person. So then that is also possible. So that simplification and handholding is being provided. Then the funding and support initiative. So you want, so you have this, you have started the basic infrastructure, you have made some few models or prototypes of the product or services, but you need funding to actually scale it up or commercialize it and take it to the next level. So that is there. And secondly, the incentives around it. Suppose it is more of manufacturing related, then how incentives you can get on land, building infrastructure, subsidies, things like that, or loans at what certain interest rate and things like that. Then also, what are the partnerships which are to be done with industry and academia? So today you are in an academic setup, I'm in an industry setup, and how we can collaborate actually. And today, if you have certain ideas, I can bring it across, or Bridge can bring it across to various people who are ready to fund these ideas if they make the necessary infrastructure, if they may make the necessary the ecosystem setup to take those ideas forward once those ideas are fully vetted. And finally, we have to incubate these ideas given all these three and make it into a big product or a services that is succeeding and achieves the vision that you as an innovator, you as an entrepreneur, you as your startup have started to do. So at this point, I would say, if these are the basics that we have to start up for the company, the idea that you have proposed. And I will start with one resource first, which is the Startup India website itself. As we go along, we will add more resources. But I'm just opening this website. Uh, can you see the website as well? Yes, sir, we can see. Okay, thank you. So this is the startupindia.gov.in portal. I don't know how many people you might have seen, but we have to register over here. And what happens is that once we register, we start getting access to the various resources, the networks, the schemes, and the programs. There are different initiatives, some of them already running, some which we will run. And what this enabler is for, and which is the topic for today, is that there is a lot of ecosystem already present with this Startup India. So what happens is that once we register, how do you register? It'll say, are you a company? So let's do that. Let's do a little bit thing. Why? I believe in the practicality of it, because unless you do that, we will not come to know. So now I've kind of registered my company, this, and you will have to register through your own. So you will say, oh, I don't have a company, what to do? So when you are at a college level, you can register through the college. So we have to keep one legal advisor in the college. And I would request Kale sir to see, whoever is a lawyer. The ecosystem in US and all in these institutions like IIT, etc. There is there is a infrastructure where we have to share the innovation done within the college with the college. Now you can take it forward and commercialize it, but college will get certain royalty or certain name that this was done in collaboration with the college that you are studying in. So you have to register a company or the college, which is your registration, from which all the system will start. And you have to log in, where there will be certain terms and conditions, which, if you remember, I had done one lecture earlier where I had said the legal aspects of innovation and entrepreneurship and startup.
So if you remember that lecture, it might be there in one of your YouTube videos earlier. I'd explained what are the legal aspects of that, and based on that, once you have these agreements and other things set up, or if you pass out, you in the fourth year and you are able to start your own company, I said that you can go to the MCA, the Ministry of Corporate Affairs website here, where you can just if you see this other website which I've just opened, so this is the application where you can make an application for LLP filing or any other private limited company, etc. Within, I'll tell you, within few hours, you will get the acknowledgement, and within 3-4 days, if it's a working, all working week, within the week, your company will be fully done with. You will have the GST number, you will have the PAN number, you will have the company incorporation number. If you have directors on board, you can appoint the directors also on board. So all those things are done in this website called MCA. So this MCA will provide all the regulator, integrator, facilitator, and the educator for the entire system where you want to first start your company, and it will give all the related activities that you want to do. Now this is important because unless you have a proper incorporation or a company, or your college incorporates this innovation incubation cell, uh, the process for the startup India can become very easy. So we have to make that, and we have to register for that. So once you register and have your access codes and email ID, etc., we can enter this. Now, there are there are these platforms where we have to connect the mentors with the startups. So, like, I'm not so active on this government portal because of my own busy area, but there are many mentors which are there. If you register and your idea is good, then they will come and actually guide you, saying what next you have to do, how you have to do those things. They will help you based on their experience, etc. So in my case, let's say if you are registered here and you say I want to take your mentorship because I am in this is more of my pharmaceutical or healthcare space, definitely I will come and mentor you once I register as a mentor. Otherwise we can do it privately as well. So this is the Startup India, the dashboard. Now see, if you see, my company is registered over here, and my profile, etc., I have filled already. So you have to fill your college profile, or if you have passed out, or if you have any family startup, etc., you can register here. Now what now we'll go through the system where how you can explore these things. So this is the largest platform for startups in India. Now there are many private players also who are doing the startup ecosystem. There are things like Mumbai Angels and that VC and this VC, and Brij will discuss more of that. But I'm talking about what is the basic enabler that we need, and that basic enabler is available here. Now, once you get more and more visibility, the private players will come into place depending on your product and service, or you may continue to develop your idea within the government space. You may be based out of maybe in a more rural area where more you are not getting so much connect with the private players. Then also you can also connect with the government of India. So if you see that how this private startup is working and how the public startup is working. So uh, how we have to do, once you register, it is all sectors and stages. They will connect you to the investor, where they will get you in touch once your idea clears a certain stage gauge with investors for funding for more and more growth. The mentors, I said, the mentors will try and help you to shape up your idea and how to actually present it, how to actually put the numbers around it, how to make it a business viable proposition, etc. Then who are the people who are going to be actually helping you create that incubation? Or incubation, what is incubation? Incubation is like, um, if you have an egg, then if you incubate an egg, then it turns into a chicken or a bird.
So that way, that is the incubation. So you just got a small idea, and once you give it the right temperature, the right ecosystem, the right environment, it will actually flourish and grow into a break out of its shell, and then become a bird. And then once it becomes that, you want to accelerate your program. Where what is the best way to accelerate it? Is it going to be a government enabled program? Is it going to be a private? Is it going to be public private? That, so accelerate and make it reach the masses, more and more people. And here, in if you go through the government, they have different departments in the government. Depending on your product or technology or service, they will connect you with that, and then they will help you reach that government bodies, where they will provide their infrastructure or access, where you can scale up and make it successful. Now, uh, as I said, registration will give you access to valuable online tools and resources for free. There are many people, and I would like to warn you here also, and be careful. There are many phone calls also which will start coming, or they might be coming also, that uh, you know uh, register with us. We will advise you on how to do startup. We'll advise you on getting benefit of so and so scheme. Those things will, phone calls will come or SMS will come, but do not believe in all that, because the resources are all available in this website and the various headings on this. You keep registering. The initial phases, you should not believe in any of these kind of people, because they will take fees, and they will do the same thing which this website is doing for you. So do not entertain those kind of people. But here there are various resources, and here approved partners are there. So tomorrow, in case you need some kind of services or some kind of real actual activities that you cannot do because you are a small company, or you are an individual, then they have these valuable partners which are available, which will help with legal, banking, cloud services if it's IT related things, and those parts. Then there are templates for every situation. Like, let's say tomorrow, once you say, okay, I've passed out, my incubation was done with the college and things like that, but now I have to start a small company, where it could be even 4 5 people. Like Infosys was company formed in garage, like Apple was formed in a garage. Like 4 5 people were there, not two, maybe one or two, 3 people also. So how to actually still start a process or a system where you've not worked, let's say, in a company at all, you've not done a service job at all, but you still want to make it into a proper functioning company, where you want certain processes, SOPs, etc. So here you will have templates for every situation, right from legal to HR to finance to customer support, how to run a company, because the idea may be great, but running company is a very different thing. Even if you are working as a job, as a service in a company, you will never know what so many departments are doing, because there are so many things which are happening. And hence, in a small company, you have to run everything yourself. As an entrepreneur, everything you will have to do with your own hands. And that is where this templates for every situation will help you. There are courses and skills which are there, which you can subscribe to and train yourself for upgradation of your own skills. Because normally what happens is at college level, we mostly get imparted with technical skills, but there are certain skills which are more than technical that we need to know financial parts, we need to know legal parts, we need to know how to pitch to investors, we need to know how to behave with our own staff or people, how to handle the government, and how to work with the government. So those parts in all are there. So all these things are there, which are there in the online courses. And then there are various challenges. Suppose you currently are not thinking of any idea, or you don't already have an idea, then government has various challenges, and we'll see one of them, one or two of them. That government has thrown open challenges, saying that this is the problem we have. And in fact, I had submitted also one or two ideas. Obviously, some people with better ideas won. So this was regarding a toilet system in rural areas, as a part of our, the Swachh Bharat program. This was few years back, where the thing does not require any additional water. It does not require any
let's say drainage system or a sewage system, and the whole thing is self contained, where there is no pipeline like in the city. So how do you develop such a toilet? So my idea was, I don't have that PDF right now. I've uploaded it somewhere in this system, but my idea was to develop something which is like a pit which will which will separate the wet and the dry part. The dry part will convert into a kind of a manure after some time, where the pit is very deep and there is a whole ventilation system, and the water is separated, and then water is filtered out and goes into the soil separately. So it was a system where there was no sewage system required to be there, and one unit is installed, and it can handle at least 20-30 people a day, and many such has to be kept depending on the village size. Then size can also be increased to 100 people a day. So this was a very ecosystem which was there. Mine was there. I think they found some. So mine was built based on more on some of it was natural material, like let's say where we make earthen pots and all. So some of them earthen pots were there. Some of them were certain fiber. So the person who won actually was who made it out of certain material which is available at a very low cost in let's say in building infrastructure out of waste. So mine was fresh material made out of earthen pot type of pottery kind of material, ceramic and other things, and his was completely let's say recycled material out of plastic waste and all. So that kind of one, because it had additional advantage of using some waste, while mine was fresh material. So anyways, they were more of the full-time people in that, and they are doing a good job on making these toilets which are not having any drainage system. So there are these innovation challenges. You can look at them. We will see one or two. And then so for startups, now these are the various questions which are there, FAQ which are there. So then each one has an answer, and then you can see. So I'm just giving you a feel of this website, and then since we just have 20 minutes more, then I'll leave 15 minutes for question and answer. So another 5 minutes. So I want to pursue as a startup. What guidance can Startup India provide me? So I just said that, and there is an intensive 4-week program. You can join that. It will give you everything. Then someone will say, I don't have a PAN number. I just told you about that. Okay, I don't have a PAN number. Your entity can be registered. However, advise the valid PAN of the entity provided time of registration. So you require, because sooner or later you will be selling that product or service, and then you will have to file your taxes, and you'll the purchaser of your product and services will require a PAN number and your GST number, and hence you have to do that. Now the question was, whether one-person company will avail benefits of Startup India. Yes, even if you have one company, one person, you don't have staff right now, you don't have friends right now, you are alone. Maybe your friends or some staff will join later. So you can do. Now suppose you have some person over there who wants to enter India. He has an invention or innovation, but he says India is a big market for this. Maybe USA and Europe is too developed for this kind of idea. Can he enter into a partnership with you? So then, yes, a foreign national can enter into partnership, and it can get recognized. So this is more about the mobile number, so have one mobile number. So normally my thinking is I always keep 2 mobile numbers. One is purely for work, wherein my work related OTPs, messages, subscriptions, calls, WhatsApp, email, everything is on that. And second I keep is for my personal use, which is mostly all family and other activities, which is not work related. And hence this you will be able to manage this work and life balance much better, so that you can handle this separately. So for this, you give your work number, so that is always available and you are able to check that. So what are the documents required? So the documents, etc. required through the TRIS. So you can go to the website link, and they will provide you the entire documents which are required. And then
startup, once you register as startup, you need to also get the certificate of recognition in 2 days. 2 days, I said, in matter of days this happens. And then some of them are not really important for us right now. So these are other things which are there. Now for mentors, now if you feel that you got enough experience as a mentor, or you know someone who's really good, he can register as a mentor. Now even I plan to register as a mentor, because now I'm more in Mumbai, less of my traveling in other places. So I will now register because my traveling is little bit managed. So I will register as a mentor, and then I will get a request to say, please help this startup or that startup. So I will do that kind of thing. And these are the facilitators. Like if your innovation is worth a patent, or you have developed a brand name or a trademark, then how do you go about that? So these are some of these things. If you are a startup, you get a lot of discount in filing patents and trademarks at nearly 50% of the cost, or even less sometimes. You will be able to file these trademarks. Now these trademarks and patents are very important, because tomorrow if your product, when it becomes successful, at that time somebody may actually copy it and start selling it if you don't have adequate patent protection. So these are the various things that resources are there. And I would say, there are these startups which are there now. See, they have given certain things where you have to connect with incubators, corporates, mentors, government, investors. So these are the sectors which are there in the startup ecosystem. So while we are studying pharmacy, uh, we can see various other sectors as well. So if you see on the left, and these are the startups which are already there. So you can be interested in some of these startups. Like some people are creating a lot of startup in making batteries, charging infrastructure, and things like that. So if you see, there is industry, advertising, aeronautics, agriculture, artificial intelligence, airport operation, analytics, animation, AR, VR, augmented reality, architecture, design, art, photography, automotive, biotechnology, chemicals, computer vision. Now, see, computer vision we lose a lot in pharma industry, because, like if you see blister pack machine or vials, they are trained to detect any black particles or broken tablets or other things, and this computer vision is used to make the software which will reject those tablets. We use that commonly in industry, construction, dating, design, education, enterprise, software, events, fashion, finance, technology, food and beverage, green technology, healthcare and sciences. So we can look at that. We'll come to that one, healthcare and sciences. So there are so many industries which are there. Now each one has a different, so you can also list your startups there. Now we can see some examples, and then we'll stop there, of what each person is doing. So we'll pick up anyone. Let's say this is more of supply chain. Let's say this is a supply chain. So this is a pharma supply chain, it seems, and I've not studied this. This is one is not filled properly. So let's look at this one. So key is that you see that person has not filled his details properly. So we have to ensure that our fully details is present. And so here we see, in this case, this is Vashu Herbal. Some examples where in Surat itself, a person has developed very special extracts of various kinds of these spices and herbs in such a concentrated form that you don't need to take your whole spices and all that thing every time add to cooking.
You just have to add a few drops and it will give you the entire flavor. So he's exporting a lot because in India people are still using the raw masalas, but internationally they don't have time to grind the spices and mix it and store it and dry it and all that. They just add these concentrated spice essential oil, which will give the flavor of elaichi, nutmeg, clove and all that. But it is for cooking purposes. So let's see what this person has done. This person has developed new combination of shampoo hand wash to establish hub and spoke novel for plants, aims to break transmission, release cycle, create idea, clean, healthy atmosphere. So they have taken all these, natural things, etc., and agro-based technology and new technique they've used, which are paraben free and chemical free, etc. So this is a registered company. They joined in August 17. Just yesterday they have joined this. So they have done this kind of a thing. So they have not put any images, etc. But if you give you a good visibility, that will be good. So I think we have done this overall introduction of the startup ecosystem, and you see the government has provided a lot of resources, and if you really have an idea, the whole thing is available for you to explore, to register, take your idea everywhere, and then obviously scale it up, get the funding which Brij will cover. But here I want to pause and see what are the questions that have been posted. If the students have asked any questions or even faculty, I'll be happy to now answer in the few minutes that we have left. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable guidance about the Startup India, Ministry of Corporate Affairs, stakeholders, legal requirements, then partner services, templates for every situations, online courses. Anuja madam, Yes. Anuja, there is a question from Darba Shastri. Yes, please go ahead. Yeah. So she has asked that to be called a startup is our business must be incorporated or registered in India not before 5 years. No, it's 5 years is not a requirement. You can register a startup anytime. But the period of all these facilities and subsidies, etc., extends up to 5 years. So the benefits, the subsidies, the schemes which are there. Let's say if somebody is putting up a factory, then they are waived from doing a certain, let's say, on registration of ESIC or provident fund. The government will pay certain provident fund, certain income taxes, certain all these benefits are available for a period of 5 years. But you can register your startup immediately as soon as you have intention to start your whichever form it may be. Thank you, sir. Next question is there from our faculty, Amol Borade, sir. So as a college, which innovation skills we can develop in our students and how to get it done? Yeah. Just for I just read that question. It for this particular ecosystem, the startup has to be registered in India, so to say. I just missed that. Now, coming to the innovation skills we can develop in our students and how to get it done. Here in your college itself, uh, what you have to do is that your curriculum is there, but ask them out of their curriculum. They may be presenting posters and things like that for their their annual meet or some event that you have on some infrastructure or some ideas or some formulation, etc. But what you have to actually do is ask them to do prototyping of certain things. So if they're just doing it on theory or on poster, then that does not give really an innovation in practice, because the practicality of that doesn't work. So tomorrow, let's say someone says that I want to prepare a herbal band-aid. So then let them start that kind of project after first taking some competition in the college, saying, okay, we want three ideas from you,
we will select ideas from each student, and then from each of those students 3 ideas, which are the good ideas, we will promote those ideas as a product or a prototype. Now this is what happens everywhere in US universities, etc. also. And if you see this, even this COVID vaccine, the Covishield vaccine is a college innovation, while the Pfizer vaccine is more of a different method. But the Covishield is Oxford University. The university has researched this, and then they gave it to AstraZeneca, who gave the technology to Serum Institute, and they gave it. So how to do it is in college, have some competition of, after this talks today, immediately you have to ask each student, say, if you were to invent something, or if you were to improve something also, what is it that you have? Please give that product or service idea. You may have one, maximum up to three. Then you have to have your college committee, and then they can list that, saying what seems to be a good idea, and allow students to develop that idea over the period of 3 to 4 years. So starting from the second year, and going up to the fourth year, and if they are MPharm students, even further, and actually take that idea to the whole cycle of innovation. So that whole cycle of innovation will give them, at the end of the day, when they are passing out, the fruit of their labor as an innovator, and that innovation will come to actual product, which then company can buy. Like if it's a great idea, even I will able to buy that product or service if it is very good. There are so many of our seniors, and forget seniors, there are so many VCs and the PE funders which Bridge will cover, who are ready to put in money. So you have to start early, develop. You may fail also. I've also failed many times in my ideas, and some of them have not worked. Sometimes they are big failures, sometimes they are small failures. But again, the key is to again improve on that, refine your model, again go ahead and develop that. So that is the way that the startups work, and then you will come to a place where you nearly perfected everything, and then people will be ready to invest in you. So this is how you have to start at college level, to make everybody implement at least one product or service idea by the time they pass out. That is would be my suggestion. Thank you, sir, for detailed clarification. Anuja, madam? Yes. Thank you, sir, for your ideas and guidance you shared today. Obviously, it will be very much informative for us and my students. Now, I request Poonam ma'am. Um, Thank you, sir, and for your valuable guidance and support. Now, I request Poonam ma'am to introduce our next guest lecture, that is Mr. Brij Sarda. Thank you, sir. Thank you, Dharmesh Dharmesh, sir. sir. Thank you so much, and nice to be meeting you all in webcam, and soon we may meet in person also. Have a Yeah, nice yeah, sir. rest of the day. All the best to Thank, all your students and faculty. Thank you so much. Yeah. thank you, Thank you. sir, Thank for you, your sir. valuable time. I will exit now. Thank you. Yeah. Okay. Dear participants, we will wait for a few minutes as our next speaker is about to join. So we'll wait for a few minutes.
we have with us Mr. Brij Sarda. Anuja ma'am? Yes. Moving towards the program, now introduce our next lecture guest, that is Mr. Brij Sarda, CEO, Medigrace Pharma, Nagpur, who is going to speak on the topic angel investment, that is on venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs. Now I request Poonam ma'am to tell us about the brief of our next our guest. Hello, Poonam ma'am. Ma'am, unmute. So it's a great privilege to have with us a very eminent personality and a great entrepreneur, Mr. Brij Sarda. Mr. Brij Sarda, currently founder and head at Medigrace at Nagpur, the healthcare advertising and training company. It deals with marketing and branding of pharma products of various companies and training the field professionals. He is the pioneer of healthcare agency in the central India. He was engaged in various work profile business that includes bulk drug manufacturing, R&D, pharma distribution, medical e-learning, corporate training, etc. in companies Qworth USV Limited. Sir is trainer, learner, thinker, social strategist, and techno-savvy. Sir has completed M.Pharm from Nagpur University in 1996 and post-graduation in business management and in advertising management from Mudra Institute of Communication, Ahmedabad. Sir has traveled internationally to impart training to international sales team in various European, Russian, and Asian countries. He has conducted more than 1,500 training sessions so far. He has handled 100 plus pharma clients, training subjects core pharma science, soft skills, analysis skills, computing skills, and life skills. Socially also, sir is very active. He was a president of Vidarbha Management Association. He was a convener for All India Maheshwari Mahasabha Socio-Economic Data, distinct trainer in Rotary International Chairman Youth Service, District Rotaract Committee Chairman. He was co-founder for Dhruv Foundation and member of office bearers of many social organizations. So this is the shortest possible introduction of Brij Sarda sir I can give. So without further delay, I would request Brij Sarda sir to cover the session. Over to you, sir. Sir, you are not audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now you are. Hello. Yeah, thank you. I hope now I'm audible as well as my slides are also available. Okay. Yes, sir. Yes, thank you so Yes, much. yes. Good morning, everyone. So good morning. I'm sharing the journey of an hypothetical entrepreneur that when a person starts with a small business and he wants to scale up. We have seen many such examples in our life. And in that journey, what mistakes people do make in the scaling up or in the expansion. Okay. How do I change my slides? Okay. This is one pharmaceutical company called as La Renault. Poonam madam, my slide has changed. The La Renault is visible now. Yes, yes. Yes, sir. Yes, thank you. Now, this company has started 15 years ago by a
5 people. One of them, the CMD, is Pankaj Singh. 5 years ago, they have started this company. So voice is getting lower afterwards. Voice is very low. Okay. Yes, sir, you can continue. Just a voice. Yes. Yeah, ठीक है, thank you. So this company today, after 15 years, 15 साल के बाद इनका अभी टर्नओवर है ऑलमोस्ट 315 करोड़, 315 करोड़. तो 15 साल में ऐसे कई कंपनीज चालू हुई होगी जिनका टर्नओवर हो सकता है कि 15 साल में 5 करोड़ भी नहीं बढ़ा हो या 10 करोड़ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंपनी से जिनका टर्नओवर 315 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है. So this is an example what I want to put across you, why some companies have started business but they did not scale up to the level, and why some companies they started business say 15 years back and today they are almost to 300 crore. So definitely there is a role of funding in this, there is a role of people in this, there is a role of product. This is what we will going to share, and I have divided this discussion into 4M, that is in the due course of time I will share with you. One example, I did share with you people last time also, sometimes when I was in the Karjat campus, that this person Kumar Sachdev started making inverters on his own, and we know that when he started his own inverter, he could able to make one inverter per day, and then he could able to extend his capacity to make 50 inverters per day. But then that startup will not grow if he kept on making inverter. मतलब अगर वो खुद ही इन्वर्टर बनाते रहते थे तो आज वो कंपनी 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की नहीं बनती थी, because he went out of that business. And then that is where the startup to scale up is the key in understanding as to how people in business they should come out of business. So this inverter making company called as Sucam, the company has grown because the Kumar Sachdev have stopped making inverter on his own, and he's actually started giving training to people, developing teams, and scaling up the entire business with a different domain, different market expansions, market segments. The fatal assumption for any startup is when the person starts a business, he feels that he's an entrepreneur, but he's not an entrepreneur. He's just a manager or a technician. फॉर एग्जाम्पल एक फार्मा कंपनी में कोई एक एमआर होता है, वो 15 साल के बाद अपनी खुद की कंपनी चालू करता है. जब वो खुद की कंपनी शुरू करता है तब उसको लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, बट नहीं, क्योंकि वो खुद ही डॉक्टर से मिल रहा है, खुद ही प्रोडक्शन देखता है, ठीक है, खुद ही इनवॉइस बनाता है या डिस्पैच देखता है, गोडाउन देखता है, C&F करता है. देयरफॉर ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, ही इज डूइंग द टेक्निकल वर्क ऑफ अ मैनेजर इन हिज ओन बिजनेस. So if you understand the technical work of a business, you understand the business that does technical work. Here technical work meaning the processes of the business. If you are doing, you understand कि business कैसा होता है, that does not make you entrepreneur, it just makes you a manager in that particular business. So sometimes some people are employee in their own business, because they are involved into manufacturing, they are involved into selling, they are actually making a selling, or they take interviews of the people. So they are doing the job of HR manager, they are doing the job of sales manager, they are doing the job of different domains. So good at technical work. Okay. And at times I read one book, उस book में एक example है, एक लेडी है, इस लेडी ने केक बनाने का बिजनेस शुरू किया. तो केक बनाते वक्त अच्छा केक बनाती थी, उसको लगता था कि मैं और स्केल अप कर सकती हूँ, तो उसने शॉप खोली और खुद ही केक बनाती थी. तो एक दिन में कितने ऑर्डर सर्व कर सकते थे, बिग मतलब पेमेंट कलेक्शन करना, डिलीवरी करना, बिल बनाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर एक ही व्यक्ति करता है, then it is not an entrepreneurship, it is though it is a startup, but it is the employee working in his own business. So the owner is he knows technical work, okay, but he assumes that he is an owner, and that leads to a fatal failure eventually. तो कुछ स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग लार्नॉन के एग्जांपल से शुरू किया था, उस फेल का मतलब है कि वो एक लेवल के बाद ग्रो नहीं कर सकते.
और वो ग्लो इसलिए नहीं कर सकते कि वो इन 3 चक्कर में वो मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, टेक्नीशियन में वो एंटरप्रेन्योर लेवल पे जाते ही नहीं है, और वो मैनेजर और टेक्नीशियन, इसका मतलब अपने ही बिजनेस में काम करते रहना और अपने ही बिजनेस को मैनेज करते रहना, and they do not come out of business. And that is the entire crux of today's presentation, that if you want to grow in business, don't work in your business, work on your business, and not definitely not initial stages. As you progress towards the growth, maturity, and scale up, we need to develop certain things and come out of the businesses so that business can run automatically. Example, जितने भी बड़े बिजनेस के आप नाम सुनते होंगे, लेट्स से महिंद्रा, लेट्स से टाटा, लेट्स से Reliance, they're all top businesses. In pharma industry, Pfizer, US Vitamins, Alkem, Alembic, the owners are not working in business, the owners are working on the business. So the conflict is 100% failure in a business is guaranteed if you are just 10% entrepreneur, means you have just vision of 10%, but as a personality you are doing 70, 80, 90% of work of manager or technician. On the contrary, as you grow from startup to scale up, the entrepreneurship should keep on increasing from 10% to 50%, 70%, 90%. And in this conflict, many people, they cannot come out because of their possessiveness, because of their perfectionism, okay, because of their micromanagement in the entire process of the business. So let's take 3 phases of the business. बिजनेस नॉर्मली जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको अपन बायोलॉजिकल टर्म में इन्फेंट्स बोल सकते हैं, बेबी, इन्फेंसी. Okay, infancy is it's an initial phase of a business. So this is where owner and the business are the same, obviously, because you have started a business, so you have to give your entire energy, entire mind into funding, into team development, into buying, selling, purchase, legal departments, government departments. आपको एंटिटीज से लेकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है कि एलएलपी बनाना है ना. तो एलएलपी के अंदर थोड़ा प्राइवेट लिमिटेड के नीचे की स्टेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर सिंपल अगर आप अकेले हैं तो आजकल 1 मैन डायरेक्टरशिप भी होती है, तो 1 मैन डायरेक्टर कंपनी बना सकते हैं. और ये सब बनाने के लिए भी बहुत ईजी है, आपके पास बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे indiafiling.com, wakilsearch.com, ऐसे बहुत सारे पोर्टल है जो आपको सारी चीजें ऑनलाइन बनाकर देते हैं. उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, अब आपको सीए के चक्कर नहीं काटने पड़ते. तो एनीवे, दैट इज एन इन्फेंसी स्टेज ऑफ योर बिजनेस. एंड मान के चलिए कि 2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपका बिजनेस अभी अच्छा शेप लेने लग जाता है, आरओआई निकलता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, रोलिंग हो रहा है पैसे का, ठीक है. अब आपको लगता है कि अपना एक स्टेज पहुंच गया है, उस अगली स्टेज को हम नाम देंगे द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस. जैसे हम अपनी जर्नी में टीनेजर्स बोलते हैं, टीनेजर्स, एडोलेसेंस, द एज ऑफ 14-15 ईयर्स इन ह्यूमन लाइफ. अब यहाँ पर वी गेट सम हेल्प. तो हम क्या करते हैं कि एक असिस्टेंट रख लेते हैं, एक सबऑर्डिनेट रख लेते हैं, ऑफिस में स्टाफ रख लेते हैं, एंड देन वी टेक सम पीपल एज अ, रिमेंबर माई वर्ड, वी टेक पीपल बिलो यू, अंडर यू, हमारे नीचे कुछ लोग रख लेते हैं. दैट इज मैनेजमेंट बाय एब्डिक्शन. Okay, management of abdiction, because we take the help. We are not employing people to give responsibility, but we are employing people to give you help. That is the stage of adolescence. अब चक्कर क्या है, यहां से या तो ये फेलियर की तरफ जाएगा एडोलेसेंस से, या तो यहां से ये सक्सेस की तरफ जाएगा बिजनेस. एडोलेसेंस से फेलियर की तरफ जाता है अगर आप इससे बाहर नहीं निकल सके तो, और एडोलेसेंस से फेलियर की ओर जाएगा, एडोलेसेंस से फेलियर की ओर जाएगा अगर आप इससे बाहर नहीं निकले. अगर इसको आप पार कर गए और मैच्योरिटी में आ जाते हैं, एंड दैट इज वेयर इन द मैच्योरिटी इट कैन लीड टू सक्सेस, प्रोवाइडेड देयर आर सम चेंजेस, बिकॉज व्हाट यू डू टुडे एंड व्हाट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग, फॉर टुमारो यू नीड टू बी अ डिफरेंट व्यू. अपने आप को आपको अलग रखना पड़ेगा. इफ यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग्स यू विल गेट सेम रिजल्ट, बट टू हैव अ डिफरेंट रिजल्ट्स टुमारो, वन हैज टू चेंज देमसेल्व्स according to the change of the business in the level of maturity. So in the small business, the business runs you. You run according to business. कि टारगेट कितना है, रिकवरी कितनी हुई, आउटस्टैंडिंग कितना है, परचेसर को पैसा देना है,
ठीक है, GST भरना है, CA को पैसा देना है, तो यू द बिजनेस विल रन यू, बिजनेस विल डिमांड योर टाइम, but the goal should be that you should work on business, you should run the business and not business is running you. That should be the goal. But ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका ह्यूमन नेचर, आपका इंडिविजुअल नेचर, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप डिसीजन कितना फॉलो कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन लेवल बिजनेस में कैसा है, अपने बिजनेस के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, और हमारा डिसिप्लिन अपने बिजनेस में कैसा है, ये सारी चीजें से मैटर करती है. एंड दैट इज वेयर आई वुड डिफरेंशिएट कि आज से 15 साल पहले जितनी कंपनी शुरू हुई होगी, उसमें से कुछ कंपनीज, जैसे एग्जांपल हम शुरू किए थे लारेनॉन जैसी कंपनी से, those people can scale up, but not all can scale up, because there is element of risk decisions to different level of mindset that is required. Now take up this 3 infancy. A person wants a place to go to work, मतलब एक ऑफिस, फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स. हमको लगता है कि यार अपना खुद का बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए अपना काम करने के लिए. तो एक बिजनेस करने का सबसे बड़ा एक माइंडसेट शुरू में आता है कि फ्रीडम मिलेगा मुझे, आई कैन वर्क एज अ बॉस, एंड हेंस द ओनर एंड द बॉस आर द सेम, इवन देयर इज अ टेक्नीशियन इज द सेम, द पर्सन इज द सेम. पहले पहले सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड बढ़ती है, अब हम किस फार्मा रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो अब हम किसी भी बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, या रिटेल शॉप से लेकर रिसर्च तक, या फिर हमें कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं एज फॉर CRO, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह. तो जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड बढ़ती है, हमारा एक्सर्शन बढ़ता है, हमारी चीज़ें डिले होने लगेगी, टाइम पर काम नहीं होता है, डिले होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द मोर इंक्रीजिंग बिजनेस. एंड द इन्फेंसी एंड्स when the owner realizes that business cannot be run in the same way as it was started. फिर हम पहुंच जाते हैं एडोलेसेंट ट्रैप में. ये ट्रैप वर्ड इसलिए है कि यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, या तो आप ट्रैप में फंस के रह जाएंगे, या फिर स्केल अप की तरफ बढ़ेंगे. द ट्रैप इज बाय सम हुक और क्रुक रिलेटिव्स और जान पहचान से वी डू सम रिक्रूट, और रिक्रूटमेंट करके उसको 2-3 लोगों का एक हिसाब से हम इसको चलने देते हैं. और यहाँ पर हम मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का बाय इंस्ट्रक्शन, not by delegation. Remember this word, getting work done by instruction means we are instructing the team that you do this, but we are not delegating the responsibilities, and hence the adolescent trap. Suddenly you realize that because there is a new person now taking up the charge for the work, and the work is not being done the way you would have done, because you are a perfectionist. हमको लगता है कि हम ही अच्छा कर सकते हैं, और हमारे हिसाब से नहीं बनता है, and therefore the quality suffers. And the moment quality suffers, फिर हमारा जो टेक्नीशियन मैनेजर हमारे अंदर का बाहर निकल के आता है. हम क्या कहते हैं उसको, बोलते तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ, बिकॉज यू वांट टू डिलीवर दैट क्वालिटी. So again owner becomes a technician, and this is a trap. And we don't own a business, we own a job in our business. और ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप में एक हमारे पास जोश होता है, एक विजन रहता है. स्टार्टअप के अंदर हमको लगता है कि हम जो करेंगे सही होगा. स्टार्टअप में हम कितनी भी एग्जाम्पल सुन लेते हैं कि उसने ऐसा किया था तो गलत हो गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए. बट हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है स्टार्टअप के समय कि उसने गलती किया पर मैं तो नहीं करूँगा, बिकॉज यू फील दैट मैं जो कर रहा हूँ थॉट्स क्लियर है. ऐसा होता नहीं है. एंड इस यहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं इस ट्रैप में, and people are keep doing the micromanagement, keep doing the same thing in their business. And let's come to back, and the people from this adolescence come back to infancy, because again they start doing their own micromanagement, they again work in the business, and sometimes somehow they survive. Remember, they survive, but स्केल अप लेवल पे जाने के लिए यहाँ पर से आगे बढ़ना पड़ता है, और उसको हम कहेंगे कि मैच्योरिटी पे जाना. तो मैच्योरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का जन्म होता है. अभी तक तो हम टेक्नीशियन और मैनेजर ही थे अपने बिजनेस में. एंटरप्रेन्योर का जन्म होता है, वेयर अ मैच्योर बिजनेस नाउ ही हैज अ विजन, ही नोज वेयर ही वांट्स टू गो and how he wants to go, what are the risks involved, how much risk he should take,
maturity is not just output of the first two phases. Okay, मतलब इन्फेंसी एडोलेसेंस के ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी नहीं आती है इस बिजनेस के एंगल से. यहाँ पर हमको स्किल्स डेवलप करना है, अलग पाथ लेना है. इट इज नॉट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीरियल प्रोसेस. मैंने बताया ना, ये ट्रैप में है, या तो आप वापस चले जाएंगे इन्फेंसी में या फिर मैच्योरिटी में जाते हैं. मैच्योरिटी स्टेज का जो माइंडसेट होना चाहिए वो माइंडसेट है, हाउ कैन माय बिजनेस वर्क विदाउट मी. ओके, so if I'm not there, how the business will run? And that is the example that the big businesses do. People, एक जैसे बहुत छोटे एग्जाम्पल में, एक रिटेल शॉप पे मान के चलिए कि ओनर है. ओनर अपना जो कैश ड्रॉर होता है, जिसको हमारी भाषा में गल्ला बोलते हैं, वो छोड़ के नहीं जाता है. क्यों छोड़ के नहीं जाता है? कि अगर मैं गल्ला छोड़ दूंगा तो फिर कुछ इसमें से चोरी हो जाएगा. इन्फेंसी स्टेज एडोलेसेंस ट्रैप में है वो. जबकि जो विजनरी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो, आप सोच के देखिए ना कि इतने सारे बिग बाजार, डी मार्ट, entire chain of the Shoppies, medical Shoppies, franchisees, Mediplace, they all are working without the owner sitting in the store. So how can my employees work without my constant supervision? What kind of a trust, what kind of a motivation, what kind of alignment we are giving? How can I free from my business? I'm not just posing the question, I will give the answer to these questions also. मतलब मैं just बता रहा हूँ कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए. इस माइंडसेट पे सोचने के बाद ही हम उस लेवल पे जा सकते हैं. हाउ कैन आई डू वर्क आई लव टू डू, बट rather than what I have to do. The purpose of business is obviously continuous profits and continuous growth. And business will grow if we keep providing solutions to various needs of the consumer and we solve the problem of consumer. So when you grow in the profit as an entrepreneur, as a business owner, you should have primarily two purposes and two jobs with you as an entrepreneur. How can I create new product, new customer, new segments? Okay, so the growth is the key. For an entrepreneur, you should not be eventually as a scale up. When you start scaling up, when you take the funding, at that stage, your entire objective should be how will I grow my business, and not about the day-to-day operations into the business. So growth in profit should be your accountability. There should be a strategy to increase more customers. How can I make repeat customers? You will see many e-commerce business. अभी जो जितने नए स्टार्टअप आते हैं, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. जैसे एक कंपनी है जो कॉफी क्यूब्स बनाती है. कॉफी क्यूब का मतलब है कि आपने कॉफी के क्यूब डाल दिया, कॉफी बन जाएगी. पर उसका रिपीट कस्टमर करना आसान नहीं. आदमी एक बार ले लेता है. लेट्स से टाटा ने एक, मेरे पास है, जैसे टाटा ने ये सोलफुल स्मूदी बनाया है. अब सोलफुल स्मूदी आप एक बार मंगा लेंगे, बट इसका रिपीट परचेस कैसे होगा, रिपीट कस्टमर कैसे करेगा? यू कैन क्रिएट अ प्रोटीन पाउडर, but what about the repeat customer, repeat purchase? Repeat purchase strategy or developing a habit to the consumer that he should buy again, developing that level of quality that he will buy again, and therefore customer experience. The first customer experience will define his repeat purchase. Okay, so word of mouth create करना है, from leads to clients to ambassadors, और number of products बढ़ाने हैं. ये सारी चीजें इसमें आती हैं, which I'll take up now into 4M techniques. That is, what are the 4M which are required for business from starting up to scaling up. Now the 4M for expansion, it looks very simple. Just याद रखने के लिए मैंने 4M word use किया. Otherwise दूसरे words भी use कर सकते. कई बार हम लोग presentation में ये जार्गन इसलिए रखते हैं ताकि वो याद रहने के लिए या एक मैसेज को इम्बाइब करने के लिए इजी होता है. The first and the foremost thing for the expansion is developing a team. Second important thing is requirement of funds, जिसमें हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं. नंबर 3 कि टीम तो आ जाएगी, फंड मिल जाएगा, बट व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल. सो दिस इज द की वेयर एक ऐसा समय आता है आपकी मैच्योरिटी लेवल में जब आपको सडनली
बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंसर्ट करना है मार्केट में, सिस्टमाइज ऑटोमेशन के साथ करना है. Okay, a lot of processes are involved where you have to come out of business and everything materialized. Materialized का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि systems, processes, products. And the other end of the business, that is merchants. एक तो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मर्चेंडाइज और मार्केटिंग और मास तक पहुंचना है. उदाहरण के लिए एक आपने कोई नया प्रोडक्ट समहाउ, एक मान के चलिए कि आपने रुमाल बनाया, रुमाल जो मास्क भी बन जाएगा और रुमाल के पहन यूज हो जाएगा. ठीक है. अब ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लाते हैं तो ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए जब तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं रहेगा, जब तक इसकी डिमांड नहीं बनेगी, पॉइंट ऑफ परचेस नहीं बनेंगे. आप मान के चलिए कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वेबसाइट बना लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट. एक प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट बना ली shopify.com पे जाकर, दैट पीपल कैन परचेज फ्रॉम द वेबसाइट. But website purchase करने से how many people are aware of your website? Then how will you promote your website? So the second method people take is, they promote through Facebook, they promote through Instagram, they promote through reels making, etc. Taking influencers, आजकल तो influencers लेकर promote करते हैं. लेकिन conventional business models में distributions, point of purchase, retailers, merchandise, visibility, the pull factor of advertising, marketing, ये सब आपको फोर्थ फेज पे आता है. सिर्फ पैसा या फंडिंग से स्केल अप नहीं होगा. सो लेट अस टेक वन बाय वन. द फर्स्ट एंड द foremost, the team development. In pharma industry, there's a continuous inflow and outflow of people. A company will hire some people and some people will leave the organization in some time. कुछ समय के बाद कुछ लोग छोड़ते हैं और कुछ लोग नए आते रहते हैं. इंडक्शन प्रोसेस चलता रहता है, सभी में होता है. लेकिन इसमें कंपनी बड़ी तब होती है जब आपको रिलेटिवली स्टेबल टीम रहे. रिलेटिवली स्टेबल टीम का मतलब होता है कि अगर हम मान के चलिए कि आपने 50 लोगों को रिक्रूट किया है तो 40 people are staying with you, 10 people will migrate for the growth. Okay, if you are recruiting 10 people, 2 will migrate next year, but 8 people should remain with you. So when you have a stable team, the stable team which is passionate, motivated, aligned with your goal, that is whatever the goal of the organization, they should feel that we are contributing to that goal of the organization, and that growth will come from the trust. किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि हम जब किसी बंदे को हायर करते हैं, हायर करने के बाद उसके ऊपर 100% फेथ और ट्रस्ट रखना होता है. जिस दिन वो फेथ और ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा हम उसको रिलीव कर देंगे, बट एज लॉन्ग एज इज विथ यू, तो उसके ऊपर 100% ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. दैट शुड बी द काइंड ऑफ टीम वी शुड डेवलप. और ये डेवलपमेंट आता है कल्चर के साथ, और ये पूरा डिपेंड करता है ओनर्स पे. एज अ ओनर, how kind I am, how polite I am, or how much you are developing your team, making them learn, making them giving them responsibilities. Okay, जब आप टीम लेते हैं ना, कई लोग फैशन के लिए टीम ले लेते हैं. स्टार्टअप्स गलतियां क्या करते हैं, कि वो एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर देंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर देंगे और हाई सैलरी पे. फिर पता चलता है कि 18 महीने के बाद उनके पूरे पैसे सैलरी में चले गए और पूरा पैसा खत्म हो गया. So do not develop the human assets as a liability. Human assets should not be liability. You must hire people smarter than you. However, you can hire them with the lower salaries and higher incentives, lower salaries and higher profits, profit sharing basis. Because the team should be asset for you, it should not be liability for you. Hence, when you are taking the interviews or taking the people, be very careful. टीम डेवलप का मतलब नहीं होता कि आपको सडनली करना है. आप याद रखिए कि यू आर इनटू इन्फेंसी स्टेज और एडोलेसेंट स्टेज. तो यहाँ पर जब हम टीम डेवलप करते हैं तो थोड़ा स्लो और राइट पीपल, दोज हु कैन एक्चुअली ब्रिंग मच मोर intellect, much more innovation, much more quality in your business. Hence, hire people smarter than you. Don't hire people who are not smarter than you, because then they will not bring any new blood. They will not bring any new ideas. जब से हम इन्फेंसी से एडोलेसेंस की ओर जाते हैं तब हमको एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 लोग रखना चाहिए.
जैसे अकाउंट्स में देर आर 2 people, परचेस में 2 people, सेल्स में 2. Why? Because number 1 dependency, number 2 sharing workload, number 3 you start developing the organizational chart, organizational system. एक hierarchy system को develop करना होता है for further expansion, for the further scale up. So initially हम ही चालक मालक रहते हैं, फिर बाद में आपको कुछ लोग by abdiction ज्वाइन करना पड़ता है, और थर्ड लेवल पे अब आगे जाते वक्त इसमें जो एक मैंने आखिरी लाइन लिखी है कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज KRA, व्हाट इज KPI and what are appraisals. KRA stands for key responsible areas of every person. Every individual should know कि what is his responsibility area. इसको डिफाइन करना पड़ता है एक पेपर पे, एक्सेल शीट पे. यू मस्ट डिफाइन कि दिस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. उस पर मार्क्स देना हो अगर, तो मैं मार्क्स कैसे दूंगा, तो मेरा चेक करने का पैरामीटर क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होना चाहिए. परफॉर्मेंस इंडिकेटर मीन्स जैसे सेल्समैन का इंडिकेटर होता है कि उसने कितना सेल किया, कितने दिनों में पैसा कलेक्ट किया वेंडर से या कस्टमर से. ओके, हाउ मच ग्रोथ ही इज गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इफिशिएंटली इज मीटिंग विद द कस्टमर. तो हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति का मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है जो हमको अप्रेजल में करता है. ये एडोलेसेंस फेज में हम डेवलप करेंगे, तब स्केलेबिलिटी फेज में हम इसको सिस्टमाइज कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट होता है. सो share profits, give incentives. Initial phase में you cannot afford to take the people of any caliber. You need to have right people, very good people. They should bring lot of energy into organization. So check their aptitude as well as attitude with lot of tests, not just casual interviews. Using the right set of questions which are related to, जैसे आप 15 मार्क का या 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए, उनको दीजिए सॉल्व करने के लिए, जो उनका टेस्ट करे एप्टीट्यूड कैसा है, जनरल नॉलेज कैसा है, अवेयरनेस कैसा है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसा होता है किसी का. और ये सारे आप पे भी लागू है. जैसे आप में एवरीबडी इज नॉट गोइंग फॉर बिजनेस. सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर सम कंपनी टू बिकम एन एम्प्लॉय, then you try to develop your aptitude to suit the organization, your attitude towards the work. कई लोग इंटरव्यू में क्या पूछ लेते हैं मतलब एज अ इंटरव्यूअर नहीं, एज अ इंटरव्यूवी, एज अ कैंडिडेट. आप कैंडिडेट पूछ लेते हैं कि सर फिर कितने बजे छुट्टी मिलेगी, सर कितनी छुट्टियां मिलेगी महीने में, साल में. दैट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉट वर्क बट टुवर्ड्स द लीव, है ना. तो काम समझने से पहले हम सैलरी पूछ लेते हैं, तो अब पहले काम तो समझ लो. कई बार हम एज अ कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं कि वी शुड फोकस मोर ऑन द वर्क, मोर ऑन द डिलीवरेबल्स, मोर ऑन द कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. बाकी चीजें आएगी ना, बाकी चीजें अपने आप मिलती है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड ऑन बोथ द साइड ऑफ द टेबल. कैंडिडेट्स कहाँ मिलते हैं और कहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं. workindia.com, ट्विटर जॉब्स, लिंक्डइन, देयर आर लॉट ऑफ जॉब पोर्टल्स जहाँ से आजकल लोग रिक्रूट करते हैं. पहले बहुत कम थे, मॉन्स्टर, नौकरी, बट अब लोग ज्यादा लिंक्डइन से रिक्रूट करते हैं. लिंक्डइन, ट्विटर इंडिया, वर्क इंडिया, डिपेंड करता है तो किस तरह के प्रोफाइल में लोग चाहिए. इंटरव्यूअर्स ऑलवेज शुड चेक द फैमिली कंस्ट्रेंट. कई बार क्या होता है कि द पीपल हु आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन दे मे नॉट गिव देयर बेस्ट प्रोडक्टिविटी because on the back of the mind they have some relationship issues, some family issues, some habits which are breaking them. So initial stage में infancy adolescence में ये बहुत important है. जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल IT कंपनी है डेलॉइट, पूरे दुनिया भर में उनके पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, तो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय में उनको मैटर नहीं करता कि कौन क्या काम करता है, वो इतना माइक्रो मैनेजमेंट कर भी नहीं सकते. तो वहाँ पर दे रिक्रूट लॉट ऑफ पीपल. एक कॉलेज में जाएंगे 20 लोग उठा लेंगे, वो मतलब मैच्योरिटी स्टेज में वो चलता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ फंडिंग, फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप, इनिशियली आपको मेरा सजेशन रहता है कि हम हमेशा अपनी फंडिंग, अगर आपको स्लो जाना है, इन्फेंसी से एडोलेसेंस में बिना रिस्क लिए जाना है, देन फंडिंग शुड बी फ्रॉम बैंक लोन्स और फ्रॉम योर रिलेटिव्स. लेंडिंग कर दिया किसी से. और इनिशियल रिक्वायरमेंट कितना होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो बैंक, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट के लोन्स हैं. गवर्नमेंट की बहुत सारी MSME स्कीम्स होती हैं. आज के सेशन में मतलब हम पूरा कवर नहीं करेंगे,
आप खुद रिसर्च करेंगे तो MSME की वेबसाइट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एनी बैंक विल गिव यू loans. So primary number one suggestion is go with the fundings, bank fundings or the relation fundings. However, if your business has एक इन्वेस्टर हर शहर में होते हैं जैसे हर शहर में एक टाई नाम का, जैसे बॉम्बे में भी होगा, पूना में होगा, टाई एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं. एंड दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट के बेस पे करेंगे, परसेंटेज शेयर के बेस पे भी कर सकते हैं. ओके. However, if your project is beyond say few crores, 1 crore, 2 crore, 3 crore के projection पे है, you may require an angel investor. Sorry, angel investor is the one who is an individual investor. Angel का मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, उसको हम angel investor कहते हैं. His own money and he is investing as an individual. He can invest at any stage. आपको बिजनेस चालू करने से पहले आइडिया उसको पसंद आया, आपने कोई प्रोटोटाइप बनाकर दिखा दिया और उसको पसंद आता है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरली ऐसा देखा गया है कि 1000 पिच करने के बाद इन्वेस्टर 10 लोगों को इन्वेस्ट करता है. मतलब द रेशियो ऑफ फंडिंग वर्सेस पिच इज जस्ट 1%. So getting loans from the banks is much easier than getting funding from the angel investor, because वो आपको जानता नहीं है और कोई भी पैसा ऐसा लगाएगा नहीं. तो लगाते वक्त वो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं. वो फैक्टर्स में अगली स्लाइड में दिखाता हूँ कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर क्या पैसा लगाते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स देखते हैं. When you start a private limited company, you can take the financer as your partner, as a director, with lot of share value. Maybe you can give lot of share value to him and low share value to you. एक और तरीका होता है 50-50 भी लोग करते हैं शेयर वैल्यू के तहत. वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसा टर्म है जो these are the companies. VCs is basically a company and angel investor it is like a person. Venture capitalist will not invest their money at the start of business unless you go from infancy to adolescence. Adolescence के स्टेज पे आने के बाद आपने एक साइजेबल नंबर की टीम बना लिया है and you can show there is a business happening. बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट है, आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आपके पास टीम डेवलप हो चुकी है. सो स्केलेबिलिटी को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, आपकी टीम का पैशन, ग्रोथ, कंपटीशन, कई फैक्टर्स को देखते हुए वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बहुत लोगों का पैसा होता है. मतलब एक मान के चलिए कि 15-20 लोगों का पैसा मिलाकर एक वीसी बनता है. तो वीसी इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ कंपनी. सो दैट कंपनी विल फंड यू. एक एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अभी ये पूरे प्रेजेंटेशन में मैं लारेनॉन का एग्जाम्पल ले रहा था, तो लारेनॉन को लास्ट ईयर करीब 100 करोड़ का फंडिंग मिला हुआ है फ्रॉम सिक्यूरा कैपिटल. सिक्यूरा कैपिटल इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी. तो उन्होंने लारेनॉन को 100 करोड़ का फंडिंग दिया क्योंकि 14-15 साल 12 साल का उनका बिजनेस उन्होंने देखा, उसके बाद फंड किया. अब जब फंडिंग मिलती है तो सडनली एक्सपांशन ग्रो करती. तो एग्जाम्पल 15 साल पहले बाकी जो कंपनी स्टार्ट हुई है उनको फंडिंग नहीं मिली. अगर सिक्यूरा लारेनॉन को फंडिंग मिल जाती है, उस फंडिंग की वजह से वो कंपनी सडनली ऑल इंडिया में 2000 एमआर खड़े कर सकती है. सडनली उनके पास मोर देन 200 प्रोडक्ट्स दे कैन लॉन्च. दे कैन लॉन्च देयर ओन R&D इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फंडिंग. पर ये पैसा कब आया? मैच्योरिटी स्टेज में. एडोलेसेंस ट्रैप से बाहर निकल के जब मैच्योरिटी पे आने के बाद आपके पास एक टीम है, एक मॉडल है, उसको देखते हुए आपको पिच करना पड़ता है. और पिचिंग में ये सारी चीजें देखी जाती है कि पिचिंग में आपको कहाँ. जिन लोगों को और क्लैरिटी चाहिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप YouTube पे जाएंगे, YouTube पे सर्च करेंगे टॉप 20 इन्वेस्टर्स, टॉप 20 वेंचर कैपिटलिस्ट और टॉप 20 एंजल इन्वेस्टर्स. नंबर 1. नंबर 2, आप लिंक्डइन पे जाएंगे. लिंक्डइन पे आप जैसे तुषार शेट्टी है बैंगलोर में, ऐसे आपको इजीली मिल जाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स. और यू विल सी दैट लॉट ऑफ सास कंपनी, आप किसी कंपनी को जब स्टडी करते हैं ना, उसमें आपको मिल जाता है कि उसके प्रोफाइल में ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो करेगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 दे विल इन्वेस्ट ओनली 5 to 1 और वेरी फ्यू पीपल. 1000 में से बहुत कम लोगों को इन्वेस्ट करते हैं. नाउ व्हाट इन्वेस्टर्स लुक्स फॉर? नंबर 1, इन्वेस्टर्स लुक्स फॉर योर प्रोटोटाइप बिजनेस. आप जब अपने बिजनेस को पिच करते हैं ना, तो ऐसा कभी पिच नहीं कर सकते कि सर इसमें कोई कंपटीशन नहीं है,
या इसमें कोई आ ही नहीं सकता मार्केट में और बहुत ज़्यादा अपने बारे में ब्लैबरिंग करना है, क्योंकि इन्वेस्टर का अपना एक माइंडसेट होता है, वो जज करता है, ठीक है। आपको अपनी क्या प्रेजेंट करना पड़ता है पिचिंग में? पिचिंग में आपको प्रेजेंट करना है कि मेरा बिजनेस मॉडल अच्छा क्यों है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी टीम, आपका पैशन और रोड मैप, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बी लाइक 100% श्योर कि बिजनेस के रिटर्न्स आएंगे ही। यू कैन बी पॉजिटिव इन गेटिंग रिटर्न्स, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट, बट नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन द पिचिंग ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली दे सी द प्रोटोटाइप, मतलब आप क्या बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, स्केलेबिलिटी, आप फ्यूचर में कितना स्केल कर सकते हैं, आपकी टीम, कोर टीम, कोर टीम का मतलब है कि जो आपके पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, उनमें कितनी एनर्जी है, उसमें कितना सिंक है, और आपका पैशन लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस को स्केल अप करने में। जैसे एक फार्मा कंपनी, तो हाउ दिस फार्मा कंपनी इज डिफरेंट देन अदर्स, ओके, दैट इज वेयर द वेंचर कैपिटलिस्ट विल लुक फॉरवर्ड इनटू। I would suggest, because we are all the students and into the college, ये इन्वेस्टिंग की बेस पे अगर जिसके पास 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, गो विद दी एंजल इन्वेस्टर, प्रिफरेबली गो विद दी 3-4 इन्वेस्टर्स जो खुद अलग अलग 10-10 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं करता है। जितना आप इन्वेस्टमेंट बाहर से लेते हैं तो आप सडनली अपने बिजनेस का खुद का कंट्रोल छूट जाता है। एंजल इन्वेस्टर विल कंट्रोल द बिजनेस, दे विल डायरेक्ट यू कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। वेंचर कैपिटलिस्ट दे आर नॉट इन ऑन द बोर्ड, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपसे एमओयू ऐसा साइन कर लेंगे कि हमने पैसा लगाया, तो उस सिग्नेचर में ऐसा कर लेंगे कि पूरा का पूरा राइट्स उनके पास चले जाते हैं। एंड ऐसा आपने सुना होगा ना कि कई लोग जैसे क्या नाम एप्पल के फाउंडर का, अभी थोड़ा he was into the business, but then he was thrown out of the business after some time because board of directors and बाकी लोग मिलकर हम बाकी the originator को ही बाहर निकाल सकते हैं, likewise. So though it looks good, getting funding is good. जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पहले एक चालू किया आपने, फिर 2 किया, सडनली आपको जब 100 हॉस्पिटल लगते हैं तब आपको वीसी के पास जाना पड़ता है। You can find in LinkedIn, you can find it around in your city and many business associations. A website called as Investopedia. Investopedia website can help you a lot in terms of getting investors, how to invest, एंजल इन्वेस्टर्स और VC के अंदर अलग अलग लोग कौन है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। क्रंच बेस इज अ वेबसाइट दैट कैन आल्सो गिव यू लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आइडियाज। And now coming to the third P, third M, material. Okay, this is the time, just 20 minutes more. But the third M, that is, it's the stage आपके पास टीम है और फंडिंग आ जाती है। ये मैच्योरिटी लेवल पे जहाँ पर आपको नया प्रोडक्ट, सीरीज ऑफ पाइपलाइन। शुरू में क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, पर मैच्योरिटी से स्केल अप लेवल पे सडनली आपको एक साथ 10-10 प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। तब जब आपकी टीम स्टेबल है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं, हायरार्की बन गई है टीम के अंदर, मैनेजर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सिस्टम्स डिफाइंड है, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर फॉर CRM, सॉफ्टवेयर फॉर ERP, सॉफ्टवेयर लाइक Zoho बुक्स, ओके, सॉफ्टवेयर लाइक Trello एक्सेट्रा। ये स्टेज जहां पर आप बिजनेस से बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप अब बिजनेस में अपने ऑफिस में जाकर चेयर पर बैठकर बहुत सारी चीजें देखना आपको जरूरी नहीं है। तो ऑटो मोड पे आपने बहुत सारे चेक पॉइंट्स बना के रख लिए हैं, सिस्टम्स बना के रखे हैं। चेक पॉइंट्स मतलब एक सेल्स टीम है, सेल्स टीम क्या क्या काम कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए मैनेजर है, मैनेजर उसको चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए आपका एक ऑफिस का स्टाफ इन्वॉल्व है, और ये सारे लोग आपको रिपोर्ट्स भेजते हैं, प्रेजेंटेशंस भेजते हैं। उस लेवल पे जब हमारा बिजनेस आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपके बिजनेस प्रोसेस को आपने पूरी तरह से रीइंजीनियर कर लिया है, या एक नए शब्दों में हम सिस्टम बनाते हैं। अभी प्रेजेंटेशन में, मेरे प्रेजेंटेशन में सिस्टम कैसे बनता है वो मैं 1-2 स्लाइड में बता पाऊंगा, और डिटेल में आज हम उसको, क्योंकि ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस होती है। बट इंपॉर्टेंट लिंक इन द स्टार्टअप इज, स्केल अप इज योर वेंडर्स, मतलब जिससे माल बनवाते हैं,
या जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं, हमारे कस्टमर्स, प्राइमरी कस्टमर जो हमारा मेजर 80% बिजनेस देते हैं, हमारे कोर टीम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये सब सेट है, तब हम कहते हैं बिजनेस ऑटो मोड पे है। इस लेवल पे इसमें आने के लिए भी और इसमें जाने के लिए भी आपको फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब इन्वेस्टर विल सी दी योर स्ट्रक्चर इन दिस पैटर्न कि आपके वेंडर्स, कस्टमर्स और मैन पावर डिपार्टमेंट्स बने हैं, और कुछ लोग रहेंगे कि इसको बनाने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस एट द मैच्योरिटी लेवल, सेल्स में प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड मार्केटिंग, परचेस में प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, फाइनेंस में लीगल इश्यूज, कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट के लीगल इश्यूज, फंडिंग, अकाउंट्स, ईआरपी। एचआर में आपका सिस्टम सेट है कि रिक्रूटमेंट कैसे करना चाहिए। अब बार बार आप रिक्रूट नहीं करेंगे, कोई भी रिक्रूट करेगा, पॉलिसी डिफाइंड है और हर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनता है कि इसी तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, एंड देयर इज नो डिविएशन इन द कंपनीज। The minimum qualification, the process one, the first interview, the second interview, payroll, trainings, etc. Exit interview, जब एम्प्लॉय छोड़ता है तो उसका एग्जिट इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर्स, आईटी, नेटवर्किंग एंड द पर्सनल। नाउ फ्यू मोर स्लाइड्स अबाउट कि ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस करना कैसे है ना, ये सिस्टम बनते कैसे हैं। तो सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिफिकेशन, नंबर्स। हर चीज को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चले कि हम फार्मा में कई बार पेन किलर्स लेते हैं, तो कितना पेन कम हुआ ये स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्केल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं VAS, विजुअल एनालॉग स्केल। तो एक पेशेंट को हमने स्केल दिया 0 to 10, ऑन द 0 to 10 प्लीज मेंशन कि आपका पेन कितना है। तो हम एक क्वांटिफाई करते हैं कि मेरा 10 में से 7 पेन चल रहा है। जैसे मैंने पेन किलर खा लिया, 3 घंटे के बाद पूछता हूँ नाउ व्हाट इज योर पेन स्केल, आउट ऑफ 7 ही मे राइट 3, फ्रॉम 7 to 3। तो वी हैव क्वांटिफाइड द पेन। सिमिलरली हर बिजनेस के प्रोसेस को आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई करना और सारे के सारे जो पैरामीटर्स है उनको सिंक्रोनाइज करना, इसको हम कहेंगे ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको एक, आप लोग अगर बैंक में गए होंगे, मुझे अभी नहीं पता, अभी तो सब एटीएम वाले काम हो गए, एटीएम और सब ऑनलाइन चलता है। पहले बैंक में पैसे कैसे निकालते थे, अभी भी अगर आप बैंक जाएंगे पैसे कैसे निकलता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग स्लाइड पे आते हैं। जैसे आपने एक स्लिप भरी, काउंटर पे गए, काउंटर पे स्लिप दिया, तो वो जो बंदा काउंटर पे बैठा हुआ है वो स्लिप लेता है, अकाउंट नंबर से वो अकाउंट, पहले ऐसा होता था कि वो अकाउंट नंबर ओपन करता था और उसमें बैलेंस चेक करता है। बैलेंस चेक करने के बाद उस पर लिखता था कि अलाउ करना है, और देन ही यूज्ड टू कीप इनटू अ डायरी। डायरी पे लिख के कि इतना पैसा इसको देना है, और वो डायरी अपने राइट हैंड साइड के एक वहां पर ट्रे रहता है, ट्रे में रख देता है। पियून आता है, पियून आने के बाद वो डायरी उठाकर दूसरे टेबल पे ले जाता है। दूसरे टेबल पे जाने के बाद वो बंदा क्या करता है, उसको ओपन करता है, सिग्नेचर टैली करता है। वो बंदे ड्रॉर खोलता है, इस बंदे का सिग्नेचर मैच कर रहा है क्या चेक के ऊपर। सिग्नेचर मैच करेगा तो वो ठप्पा लगाएगा, फिर बंद करेगा और टेबल की ये साइड रख देगा। पियून वापस आएगा, वहां से उठाएगा, कैशियर के पास ले जाएगा। कैशियर वहां से निकालता है, वो अपने आप एंट्री करता है कि मैंने इसको 1000 के इतने नोट दिए, 500 के इतने नोट दिए, और सिग्नेचर लेकर इधर से रख दिया। ये पूरा प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस ऑटोमाइज्ड है। ऑटोमाइज्ड है मतलब इधर रखना है, फिर उस टेबल पे जाना है, उधर से इस टेबल पे जाना है। इसी चीज को हम अगर अपने बिजनेस में जब प्रोसेस करते हैं उसको हम कहेंगे ऑर्केस्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इसमें जितना इनोवेशन आप ला सकते हैं, जितना इजी कर सकते हैं, यूजिंग गूगल शीट्स, यूजिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, this is a stage where you are going towards maturity in your business, scaling up your business. Okay, so developing all these strategies कि हमको बिजनेस को कहाँ ले जाना है, एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, लोगों की स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड सिस्टम स्ट्रेटेजी। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाना है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में बिलिंग कैसे होगा, बिलिंग का कलेक्शन कैसे होगा, बजटिंग कैसे बनाएंगे,
कैश फ्लो कैसे मेजर करेंगे। और आप देखिए मतलब हमने हर डॉक्यूमेंट को नंबर दिया है, डॉक्यूमेंट नंबर 100, डॉक्यूमेंट नंबर 110, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा, प्राइसिंग कैसे बनेगा, परचेसिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। बिकॉज वंस इट इज डन, वेंडर सिलेक्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेंडर सिलेक्शन। वेंडर का मतलब है किसी बिजनेस में किसी को लैपटॉप खरीदना है 10, तो लैपटॉप किससे लिया जाए। तो वेंडर सिलेक्शन में पॉइंट नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वेंडर। तो उसमें हम लिखेंगे कि फ्लोट योर इंक्वायरी, डेवलप द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फ्लोट योर इंक्वायरी, सेंड इट टू 4 वेंडर्स। और वेंडर्स कहाँ मिलेंगे, लोकल में, उनसे कलेक्शन करना। ये सारा डॉक्यूमेंटेड होता है। ये पहले इसमें नहीं होगा, मतलब इन्फेंसी एडोलेसेंस में नहीं होगा, ये 2-3 साल का टाइम लगता है। एज यू ग्रो, धीरे धीरे आपको हर डिपार्टमेंट का सिस्टम बनाना पड़ता है। दैट इज वेयर वी से getting just money is not scaling up, getting funding is not scaling up, getting into micro details so that you do not have to manage micromanagement in the business, which should defined by a standard processes. जैसे हम कहते हैं ना कि the country is run by the laws and constitution, already है तो हर चीज उसी के हिसाब से चलेगी। Now the fourth M is merchandise. मर्चेंडाइज इज आपके प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के लेवल पे चलाना, आपके प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल कर देना, सडनली मार्केट में बूम कर देना। एक्सपांशन मतलब हर शहर के अंदर होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स, पॉइंट ऑफ परचेज के ऊपर आपके डैंगलर्स, डिस्प्ले। सडनली यू हैव रेप्लिकेटेड फ्रॉम 1 स्टेट टू 10 स्टेट्स, अपॉइंटेड डीलर्स कि हर रिटेलर काउंटर। एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने शायद अगर इपिगामिया नाम का प्रोडक्ट अगर सुना होगा, इपिगामिया की वेबसाइट चेक करिएगा। इपिगामिया एक योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं। जिन्होंने नहीं सुना है, इसका मतलब इपिगामिया अभी तक अपने डीलर नेटवर्क में सक्सेस नहीं है, या फिर मार्केटिंग में सक्सेस नहीं है, या फिर पेनिट्रेशन में, बूम एक्सपांशन में या मर्चेंडाइज में सक्सेसफुल नहीं हुए। इपिगामिया सुपर बाजार में मिलेगा, इपिगामिया कुछ कुछ रिटेल काउंटर पे मिल जाता है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं है। आप जाके मांगेंगे इपिगामिया तो मिलेगा, बट पुल फैक्टर नहीं है कि इपिगामिया का कहीं। लेकिन किसकी कंपनी है, दीपिका पादुकोण की कंपनी है। दीपिका पादुकोण ने उसको फंड किया हुआ इस कंपनी को। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग फंडिंग, दे आर स्टिल इनटू स्लो पेनिट्रेशन, दे आर नॉट इनटू मार्केटिंग एंड गिविंग लॉट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। तो उस लेवल पे अभी तक ये मर्चेंडाइज गया हुआ नहीं है। पॉइंट ऑफ परचेज पे इपिगामिया का प्रेजेंस नहीं है। एग्जाम्पल मैं बता, एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा। इस स्टेज पे बहुत सारा पैसा लगता है। अब ये पैसा तब इन्वेस्ट करना चाहिए हमने जब हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऑलरेडी आप मार्केट को स्टडी कर चुके हैं, मार्केट को आपने कस्टमर का पल्स आपको पता है, कहाँ पर पुश करना है, पोजीशनिंग लेवल क्या है। मतलब ये मेरे को ऐसा पोजीशन करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो मैं प्रोडक्ट बता रहा था, उसको पोजीशन करना है कि रोज शाम को 4 बजे, रोज दोपहर को 4 बजे आप क्या करते हैं, लंच 11 बजे और डिनर 9 बजे रात को। तो 4 बजे का समय है, वहाँ पर आपको प्रोटीन स्नैक्स खाना चाहिए या ऐसा स्मूदी लेना चाहिए। वो एडवर्टाइजिंग मॉडल, आपको पोजिशनिंग मॉडल क्या है, कैसे इसको रेप्लिकेट करते हैं, क्या प्राइसिंग पे करते हैं। ये हो गया मार्केटिंग साइड में। डीलर्स नेटवर्क, पॉइंट ऑफ परचेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्केलिंग अप योर बिजनेस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस दे आर गुड, दे स्केल अप, पैसा भी मिल जाता है, लेकिन वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो टीम है, माइक्रो लेवल की टीम, वो माइक्रो लेवल की टीम उस हर रिटेल काउंटर पे पहुंच ही नहीं पाती, उनको वो अलाइनमेंट ही नहीं मिलता। पेप्सी, कोका कोला तो हर गांव में पहुंचे ना, क्योंकि उन्होंने वैसी टीम और वैसा कल्चर बनाया है। तो कल्चर एंड सिस्टम्स जब अपने जगह पे प्लेस आ जाते हैं, उसके बाद आप मर्चेंडाइज लेवल पे जाते हैं। टेक दिस एग्जाम्पल, ये आप शायद आई डोंट नो कि पता है कि एक चीज में मिस हो गई है कि आप जैसा कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं, तो वो मार्केट में लाने से पहले उसका पेटेंट करना बहुत जरूरी है। तो पेटेंट को आसान भी हो जाता है, इजीली है। पेटेंट अटर्नी के हिसाब से बहुत सारे सेशंस भी होंगे पेटेंट्स को लेकर। एक जो मैं आपको एग्जांपल शेयर कर रहा था कि आपने रुमाल बनाया जो मास्क भी बन जाता है, तो हैज टू बी पेटेंटेड फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर देखेगा कि प्रोडक्ट पेटेंटेड नहीं है तो कल तो और 10 कंपनी आ सकती है, पेटेंटेबल रहेगा तो। अगर अदरवाइज अगर पेटेंटेबल नहीं भी है, तो आपके अगले 10 साल में 10 इनोवेशन आने चाहिए, मतलब मोर इंप्रूवमेंट इन दैट प्रोडक्ट, सो दैट पीपल शुड नॉट कैच अप विथ यू। और जब तक आपको कॉपी करेंगे तब तक आपका और आगे बढ़ जाना है। ये जो प्रोडक्ट है इजी स्पिट, ये करीब 4-5 साल पहले लॉन्च हुआ था,
इसको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, इनके पेटेंट्स भी हैं इनके पास। प्रोडक्ट्स देखिए, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और शायद आपको और मुझे नहीं पता, अभी तक ये प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। मीन्स दे आर इनटू एडोलसेंट स्पेस, बट दे डिड नॉट मैच्योर इनफ कि उस प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सके। फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फंडिंग इनको बहुत मिल जाएगी, मिल भी गई होगी। फंडिंग में इनके प्रोडक्शन में पैसा चला गया होगा, तो मार्केटिंग में शायद वो सक्सेसफुल नहीं हुए। नंबर 2, जो टीम डेवलप होनी चाहिए सेल्स में, जिस टीम का पेनिट्रेशन होना चाहिए, जिसको एक वर्क मिलना चाहिए कि तुम्हारा डेली असाइनमेंट, डेली टास्क क्या है, कितने शहर को पेनिट्रेट करना है। ये मेरे अजम्पशन से हो सकता है इनके प्लान्स अगले 2 साल के बाद होंगे, अभी वो और मार्केट को पेनिट्रेट करके फिर बाद में बूम लॉन्च करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज, ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट है थूकने का, थूकदानी। जैसे आप कार में पान खा के बैठ गए, अब पान के बाद पान की पीक कहाँ थूकेंगे? तो आप इसमें थूकेंगे। खर्रा खाते हैं या जेब में रखे पाउच, खांसी आती है, बलगम निकलता है, कहाँ थूकना? स्वच्छ भारत के लिए, और गंदगी नहीं होना चाहिए वहाँ थूकने के बजाय। इसमें कुछ उन्होंने एक पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया है कि जो एक जेल है, जैसे आप थूकते हैं तो पूरा वो सॉलिडिफाई कर देता है, उसकी स्मेल कन्वर्ट कर देता है। दैट प्रोडक्ट दे हैव डेवलप्ड. So with these examples, I want to tell you that do not make the mistakes in pitching, do not make early scale up, give time to your business, but then do scale up at the right time. Develop your team, develop your systems and processes, because the lifespan of business from infancy to adolescence, it can go back to infancy, and therefore the failure. The success comes when from adolescence we go to maturity, and from maturity then there is the sky is the limit. You get a lot of funding, people will invest in you, you generate more money in your own business. And so at various business stages you will see the introduction stage, that is infancy, जहाँ पर पैशनेट टैलेंट होना है। ग्रोथ स्टेज में आपको क्रिएटिव टैलेंट चाहिए जो प्रोडक्ट को इनोवेशन ला सके, एग्जिस्टिंग मार्केट को ही आप सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे सेल्स टीम बहुत अच्छी होना चाहिए। एक्सपांशन स्टेज में जैसे आएंगे आप फंड लेंगे, नए मार्केट में जाएंगे और नए पार्टनर्स बनाएंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि हर जगह अपनी टीम नहीं खड़ी कर सकते, तो यू कैन डेवलप मास्टर फ्रेंचाइजीज, मार्केटिंग एजेंट्स, कोलैबोरेशन, स्टेट हेड्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आपकी प्रोसेस और सिस्टम पूरी रिफाइन हो जाती है। एंड फाइनली एट द मैच्योरिटी स्टेज you are very innovative, launching new products, you are specialized in their structure and new services. So go stage wise. What you learn in today's session is, number one, if you feel that you have something extra in terms of sustaining the risk, in terms of your own discipline, कि बिजनेस को डिसिप्लिन लगता है, बिजनेस को कैजुअल अप्रोच नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं अपने काम को लेकर, आप में लर्निंग एबिलिटीज हैं, यू कैन मैनेज पीपल, लीडरशिप एबिलिटीज हैं, यू कैन गेट आउट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, परफेक्शनिज्म नहीं है, देन स्टार्ट योर बिजनेस विद इन्फेंसी, गिव टाइम, डेवलप प्रोसेसेस। राइट टाइम पे आपको राइट फंडिंग मिल जाती है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है फंडिंग के लिए। द बेस्ट रिसोर्स इज लिंक्डइन, एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्कशॉप एंड सेमिनार्स कीप हैपनिंग इन मुंबई, जहाँ पर एंजल इन्वेस्टर्स मीट होती है। तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ा सा ओपन रखना पड़ता है, तब तक अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर बेस, ये बढ़ता है। आपको मॉनिटर करना चाहिए कि कस्टमर बेस मेरा बढ़ रहा है, टीम मेरी बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स मेरे बढ़ रहे हैं, नेटवर्क। सो दिस इज अ आप इसमें लास्ट में जो जितने सर्कल बने हुए हैं, उस सर्कल में आप देखेंगे कि पहले बिजनेस और ओनर सेम होता है, और धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टेज 5, जहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा और पर्सन द ओनर थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस अपने आप चलने ऑटोमेटिक इस पे चलने लगता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2-3 लोग होते हैं, बाद में ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग भी हो सकते हैं। सो ईच स्टेज ऑफ बिजनेस डिमांड्स अ डिफरेंट यू. You cannot be same at the each stage of business. If you can transform yourself in the different you, तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना, समय के साथ अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, देन ओनली। जैसे कुछ लोग रहते हैं कि जो एक एग्जांपल है, एक आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि अपनी बात बात पे गुस्सा आता है। आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस, बट एट सम टाइम मेबी यू रियलाइज दैट यू नीड टू चेंज दैट. I just these are the various things. I'll just skip that. Do not scale too early.
A working model, working prototype is important when you're funding, when you're pitching. You must be scalable, है ना. एक कोई भी चीज स्केलेबल हो सकती है. एक लॉन्ड्री है, एक रिटेल शॉप है, एक अगर आप ऐप बना के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना. इट कुड बी e-commerce, it could be education business, any service business. Focus on your market segment and customers and grow organically. Initially organic growth कीजिए, बाद में आप expansion growth पे करेंगे, और scalability धीरे धीरे improvement से आता है. So wrapping up, your business is a tool. Use your business to create life you want. हमको जो लाइफ चाहिए वो लाइफ को बनाने के लिए बिजनेस करिए. बिजनेस सिर्फ मेरा इतना टर्नओवर हो गया या मैं अभी टॉप लेवल पे आ गया. और एक Naukri.com वाले का इंटरव्यू सुना था कि वो Naukri.com सक्सेसफुल हो गया, लेकिन एज अ लाइफ ही वाज अटर फेलियर, मतलब वाइफ छोड़ के चली गई वगैरह. तो जिंदगी में आप जो जिंदगी चाहते हैं वो बनाने के लिए बिजनेस होता है. बिजनेस आपको रूइन नहीं करेगा, बिजनेस आपको रन करेगा. सो थैंक यू सो मच. ओवर टू यू मैडम. थैंक यू. Madam, please unmute yourself. Thank you, sir, for your guidance and valuable ideas that you shared today with us. Sir has given us a very valuable topic on that is angel investment, venture capital funding opportunity for early stage entrepreneurs. Sir describes about the three phases of business, that is infancy, adolescence, maturity. Sir has shared also about the small business, how to run, what should be the goal. And sir has told us a very important quote that you should run the business, not business runners. You should be sincere and prompt to your business, then only you will run the business. And about also, sir has told us the 4M of expansions, that is man, that's team, money, then material, merchant, that is merchandise. It was very valuable to our students and participant. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I feel honor to get opportunity to propose a vote of thanks of today's programs on behalf of Kokandanpit, Rahul Daga College of Pharmacy and Research Institute. I convey my regards and hearty thanks to all the teaching staff, technicals, staff, organizer who put their persistent effort to make today's program successful. I would like to thank our principal, Dr. Mohan Kale sir, who guiding us, motivate us to strive for best. I would like to convey my special regards to management, without whose supports the event wouldn't have been possible. And yes, thank you for all the participants for attending the live session. Thank you. Thank you, sir.